हेलो हेलो हेलो। नमस्कार नमस्कार। क्या हम लाइव आ गए? क्या हम लाइव आ गए? यस, हम लाइव आ गए हैं। नमस्कार नमस्कार। एक सेकंड में चेक करूँ जरा अपना साउंड। ठीक है, सब सेट है मामला। चालू करते हैं। आज हमें थोड़ा सा यूनिक गेम खेलने का मन किया, तो हमने कहा आज कुछ नया खेला जाए। तो आज हम खेल रहे हैं व्हाट रिमेन्स ऑफ एडिथ फिंच। काफ़ी टाइम से मेरी स्टीम लाइब्रेरी में पड़ा हुआ गेम, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा है, लेकिन कभी खेलने का टाइम नहीं मिला। तो लेट्स गो। A lot of this isn't going to make sense to you. But before that, let's turn up some dialogues, little bit of sound effects, and good master volume, along with some music. Yes. And I'm sorry about that. Okay. I'm just going to start at the beginning with the house. Okay. अच्छा, तो हम किसी स्टोरी बुक में हैं। ओके। आई होप ये कोई हॉरर गेम ना हो। अच्छा, शिफ्ट से भागते नहीं, शिफ्ट से जूम इन करते। I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. अच्छा, सबटाइटल स्टोरी के अंदर है, स्टोरी का पार्ट है। I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. ओके। अच्छा, ऐसे धक्का मार के खुल जाएगा। In a गेम वैसे will, छोटा भी my है mother काफ़ी। left me a key, but didn't tell me what it unlocked. अच्छा। Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. कहाँ जाना है हमको? नीचे? तू कहीं जंगलों में आ गया? The यार, truth is, भाग नहीं सकता। even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. ये इतना बड़ा घर। But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. तो ये कोई मिस्ट्री गेम The है। woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something but never do. यस। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती, मतलब जो इतने बड़े घरों में रहते हो अबैंडन कैसे कर लेते हैं यार? कम ऑन, मतलब ये तो थोड़ा सा टेरेबल The लुकिंग house है। was exactly like I remembered it. The way I'd been dreaming about it. व्हाट द फक? ये कैसा घर है? नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट मैंशन, बड़े जो होते हैं ना, राजमहल। ये तो गोरेगांव का एंटीला लग रहा है मेरे को। ओके, ये है घर। भाई इधर तो अच्छा है, As a अबैंडन करके child, गई। the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. अरे तो ऑफ कोर्स, ये देखो ना, अनकंफर्टेबल नहीं है तो क्या है ये? जो उधर रहता होगा सबसे ऊपर, उधर उधर, उसका क्या हाल होता होगा? ये तो घर ऐसा है कि मतलब 4-5 घर चोरी करके ना ऐसे लेगो ब्लॉक्स की तरह ऊपर ऊपर लगा दिए, एक के ऊपर एक। ये क्या है? Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was What? afraid of the house. स्केरी लुकिंग तो है यार, आई डोंट ब्लेम हर। दरवाजा I खोलते हैं। hoped the key might unlock the front door. It didn't. नहीं, ऑफ कोर्स इतना सिंपल तो नहीं होगा।
झाँक सकते हैं? झाँक Looking सकते हैं। in, I felt like the house itself had been waiting for me. ओके, झाँक लिया, अपने ही घर में झाँक लिया चोरों की तरह। गेम का ना फील थोड़ा फर्स्ट इम्प्रेशन में थोड़ा वैसा है, साइलेंट, और जैसे वो होता है ना हॉरर गेम का, क्योंकि देखो भाग भी नहीं सकते, चल ही रहे हैं हम। इधर से जा सकते हैं मंदिर? आई होप सो, यस। Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. लाइट जलाओ। The power had been turned off the night we left. अच्छा, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, कोई आ नहीं रहा तो लाइट कैसे ऑन होगी? थोड़ा टाइम लगता है मेरे को भी ना ऐसे गेमों में ढलने के लिए, और वो स्टूपिड शिट कम करने के लिए। For the first time in years, I felt like I was home. Is this our home? ये But instead of a family, there were just memories of one. ओके, थोड़ा डिप्रेसिंग सा फील कर रहा है गेम। Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. गुड, चाइनीज फूड इज गुड, मतलब उससे तो बढ़िया ही है Or how अमेरिकन after Louis started burgers। working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. नो, कैनरी अच्छा नाम है किसी उसके लिए, कैन फूड कंपनी के लिए। Nothing Well in the thought. house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. इन लोगों को शायद पढ़ने का ज़्यादा शौक है भाई, बहुत किताबें। A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. ओके, तो पॉसिबली कोई डिजास्टर आया था। घुमाना है इसको, घुमा देंगे। किस तरह घुमाना है? आई गेस हाँ, क्लॉकवाइज घूमता है। Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. अच्छा, तो इसके दादाजी Mom ने always घर told me बनाया। to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. तो ये चाबी किस चीज़ की है? Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. अच्छा, ये था ओरिजिनल हाउस। सी, ऐसे ही घरों की बात कर रहा था, जो मैंशन टाइप के होता है ना, जिसको लोग अबैंडन पता नहीं कैसे कर देते हैं। मैं भी डर जाते होंगे इतने बड़े घर में रहने से। The table was still a wreck from the night we left. ये It तो was like a बिल्कुल bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. अच्छा, तो एवरेज नॉर्थ इंडियन रिश्ते, सास बहू लफड़ा, तो वो चल रहा था घर में। इधर क्या है? ये शायद स्टोर रूम था। अब हमें ऊपर जाना चाहिए आई बिलीव। इधर की चाबी है क्या? नोप, ये तो पूरा बार्ड है। बहुत सारी किताबें हैं भाई। After Milton disappeared, Shit. Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Peoples? कहाँ? Sven, Edie. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. अच्छा है, ऐसे झांकना अच्छा लगता है मेरे को भी। Of course,
My Grandpa Sam जान spent पहचान के 7 लोगों years के घर sharing में। a room with his dead brother, Calvin. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. भाई बिगफुट हमारा पीछा नहीं छोड़ता कभी। बिगफुट has been there and will always be there. Oh my god, हर जगह आ रहा है बिगफुट। बिगफुट पीछा नहीं छोड़ रहा। अब तो मेरे को मौत के बारे में सोचना पड़ेगा। Edie's father Odin built the original house. अच्छा, इधर जाके हैं बारबरा का कमरा। Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. हाँ, हमको एटिक में जाना था ना। Mom must have locked the Attic third में floor stairs on the night we left. नहीं जा सकते एटिक में। अंडरस्टैंडेबल। यहाँ से हम होके आए थे। Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. ओके, ये थोड़ा सा वियर्ड है। मतलब घरों के बाहर नाम लिख के डेथ की तारीख भी लिखी है। कीड़े दीवार पे टंगे हुए। I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. ओह, वॉल्टर वाइट I का think room my है। mom sometimes regretted not sealing it up. ड्राइंग भी अच्छी बना रखी है भाई। Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. डायरी की चाबी, व्हाट द फक। खोलो इसको। Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. अफ्रेड ऑफ कुछ है इस घर में, आई बिलीव। फिर जब From the ये लोग paintings on the गए हैं wall, तो it was clear my brother Milton had been here before me. इस गेम में थोड़ी कम जोकिंग भी करूंगा Reading मैं, this, maybe it sounds like I had a plan, क्योंकि ये but I गेम had ना, no idea what was behind that door. यस, लाइक आई वाज सेइंग, इसमें कॉन्स्टेंटली स्टोरी में कुछ ना कुछ बोली जा रही है ये, तो इट्स बेटर कि हम थोड़े अपनी बकचोदी कम करें और गेम को एंजॉय करें। Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. What is gerbil? Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. अच्छा, ये लोगों को कमरे में झांकने की आदत थी इसको। ये उसका बेड है, लड़की बच्ची जो भी थी, और ये उसकी डायरी है। December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to पास्ट eat. में आ गया। Nice. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. इधर जाए, वॉशरूम। I kept eating and eating. ब्रश करेंगे। ई, the fuck? ऐसे ब्रश करते हैं? I ate a lot of things that night. ये कौन सा ब्रश करने का तरीका है? The fuck? Then I heard chirping outside my window. Weirdo. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. नहीं जा सकता। And suddenly, What?
was a cat. The fuck? मैं बिल्ली बन गया. Nice. I tried to be quiet, but the bird was really scared. इधर आ. मर्डर मार देंगे आज तो चिड़िया का. ऊपर नहीं चढ़ सकती ना. अचानक से थोड़ा गेम ट्रांसफॉर्म होके कुछ और बन गया. Mom and Dad didn't even look at me. That's sad. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. What the fuck? I gobbled her up, गिर गए. and suddenly I was an owl. First, all I heard was the wind. Okay. Then I heard little teeth nibbling in the grass. ओके तो हम अब उल्लू बन गए. मतलब उल्लू पक्षी बन गए. उल्लू तो एक गेम बना रहा है ना. Rabbits. रैबिट. ओरा. इधर आ. मेरे चंगुल. पकड़ लिया. ओ पकड़ लिया भाई. फर्स्ट ट्राई. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Weird family. Very weird family. A mama rabbit. इधर आओ. पकड़ लिया. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Baby shark. What the fuck is going on? क्या है भाई? एक सेकंड. ओए, what the fuck? अरे ये शार्क जमीन पे क्या कर रही है शार्क? ओ भैया, ये तो सही में बच्चे की इमेजिनेशन है यार. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. ओ भाई, जंगल में सीधा फेंका. लेकिन एक सेकंड, नीचे नहीं जाना, नीचे जाना. I wanted fat, juicy seals. कहाँ गई? ये भागने झपट्टा कैसे मारे? ऐसे? Oh, this time it's getting hard. What? आ गया. I tore off her flipper, and it tasted really good. कहाँ गई? ओरी इधर आ. भाई मच्छी कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है. कहाँ गई? ओरी oh my god. I grabbed on tight, पकड़ ली. but I was so hungry, I jumped out of the water. Okay. When I opened my eyes, everything had changed. How so? ये क्या है? The fuck? मैं eel बन गया. मैं eel बन गया. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. लेकिन ये कहाँ जा रहा हूँ? I don't know. ये ज़्यादा ही weird है गेम.
I wasn't expecting this type of weird game. What the fuck? ये है क्या चीज? ये स्नेक है ये? What the fuck? मैं कर भी क्या रहा हूँ? Oh, okay, okay. कुछ तो बन रहा हूँ मैं बच्चे की इमेजिनेशन में. गाड़ी के नीचे आ गया. साउंड की तरफ चलते हैं. नहीं इधर कुछ नहीं. अलर्ट? कौन सी अलर्ट भाई? अभी तो देखा. थोड़ा टाइम तो लगेगा. 3 सेकंड का डिले है यार. कम ऑन. कौन सी गेम में आ गया? I wanted to stop, but also I didn't. ऐसी चीजें भी बच्चे इमेजिन करते हैं क्या? मैं तो बहनचोद पावर रेंजर के नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कर रहा होता था. अंकल इसको नहीं काट सकता मैं. I don't think so. हाँ मेरे को भी लग रहा है सक्शन का फील गुड टाइप का प्रोटैगनिस्ट. ऊपर नहीं जा रहा. ओए जा सकते हैं. डैम. चल चल चल. कहाँ है मेरा स्नैक? स्नैक काट ले इसको. After the काट last लिया. passenger, I was still hungry. And across Oh, the my. water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. स्नैक वापस आ गया. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. फिर नाली में आ गया मैं उसको खाने के बाद. भाई ऐसे कौन सा बच्चा इमेजिन करता है ये चीजें? वो लड़की खुद गाइड कर रही है कि अपनी स्टोरी में वो क्या क्या बनी. मैं टॉयलेट में जा रहा हूँ. ओह नहीं मैं टॉयलेट से बाहर आ रहा हूँ. टॉयलेट से तो अभी निकला हूँ मैं. ओके. I got closer and closer. अपने ही रूम में आ गई है तो. ओके. नाउ व्हाट? घूम फिर के अपने रूम में आ गई. ये नहीं ये उसकी शायद बहन है. पता नहीं कौन है ये अपने फैमिली के जो कैरेक्टर्स है ना उनके रूम में जा जाके कुछ ना कुछ बता रही है उनके बारे में. ये एडिथ फिंच नहीं है. एडिथ फिंच ये अभी पास्ट में है. हम स्नैक को हम बाहर ले चलते हैं. आई डोंट नो. थोड़ा सा ज़्यादा ही अजीब लगा ये गेम तो इसीलिए मैं सोचा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई. लेकिन मेरे को अभी भी क्लू नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ. मैं कहाँ जा रहा हूँ. एक सेकेंड पलंग के नीचे क्या है? All my stomach started growling. Okay. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. हाँ एक स्ट्रीम में खत्म हो जाएगा ये गेम. लेकिन ये कौन सी बच्ची है यार? ये क्या बोल रही है? सही में बच्ची थी ये कोई? I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have.
तो मॉली की हमने स्टोरी जानी है अभी, इसके घर की छोटी बच्ची। अरे अब मरे हुए लोगों की क्या प्राइवेसी यार, पढ़ सकता हूँ। This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Her room was like a museum. ये परदादी का रूम है इसकी। For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. ओके ठीक है, समझ गया। ओडिन, इसके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम ओडिन था। ओए सिलाई मशीन, ये तो वही है बिल्कुल क्लासिक इंडियन हाउस होल्ड वाली। Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Okay. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. ये कौन सा बाथरूम है भाई? What the fuck? It was a pretty big trace. What? ऐसे किसके बाथरूम होते हैं? चाबी 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 चाबी, खोलो खोलो डायरी। Sven and Edith Finch. तो ये दादा दादी की बारी। There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Wow. भाई साहब, बेब्लेड। Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. नहीं, ऐसा तो कोई सीन भी याद नहीं मेरे को बेब्लेड में। कब हुआ ऐसा कुछ? क्राउच करने का बटन? नो बटन? अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। ये किसका रूम है अब? कैल्विन का रूम है। I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. ओके, अच्छा ये ग्रैंडपा का रूम। I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. थोड़ा तो कंफ्यूजिंग हो रहा है गेम, but let's hope everything would work out. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Oh, तो हम बच्चे बन गए कोई। अब मैं My झूला brother झूलूं। said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At What? Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. अच्छा, तो सैम बन गया अब हम, दादाजी। Sam, Calvin, dinner's ready. Coming. But that day, he finally made up his mind to do it. झूला झूल रहा हूँ मैं, मेरे को चक्कर भी आ रहे हैं। I told him going around was impossible. मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या पूरा फ्लिप कर सकता हूँ एक 180? Maybe if I hadn't said that. Let's try. ओए, कुछ हुआ? Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind तो hadn't बड़ा picked up, यूरोपियन एक्सेंट है भाई। then maybe he'd still be here. But I doubt it. ओह, I 180 think 180 he'd already टाइम। made up his एक mind. 180 तो बनती है। नहीं, 180 शायद कर नहीं सकते, मैं पूरा ही That's घूम what I गया। want to remember about my brother. नहीं कर सकते। अब रुकना चाहिए। अब रुक जा। नहीं रुक रहा भाई, नहीं रुक रहा। बच्चे, रुक रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है। अच्छा, खुद ही रोकना पड़ेगा। ओह माय गॉड। खुद ही रोकना पड़ेगा।
ओ माय गॉड, ये क्या खेल रहा हूँ मैं। रुक जा मेरे भाई, रुक जा, चक्कर आ रहे हैं मेरे को, चक्कर आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। नहीं, ईट ईट करने की कोशिश करी थी मैंने अभी। ईट ही करना है क्या? आई डोंट थिंक सो ईट करना है मेरे को अपने आप को। अपने आप रुक जाएगा ये। आई होप मेरे को कुछ करने की जरूरत ना पड़े। पीक गेम प्ले। ओए अपने आप रुक गया, अपने आप रुक गया। नो एफर्ट्स, नो एफर्ट्स। रुक गया रुक गया। रुक जा बच्चे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अच्छा ऐसे बूस्ट होता है? नहीं नहीं, रुक जा भाई, रुक जा, कुछ मत कर। यार ये झूला ही वैन चो। रुक गया ना, रुक गया रुक गया। आई होप रुक जा। नहीं रुक रहा। अरे रुक जा यार, मम्मी खाने पे बुला रही थी। अब रुक गया। आई बिलीव अब रुक गए। उतर जा भाई, ये तो उतर भी नहीं रहा। कुछ दबाना है क्या? आई डोंट थिंक सो कुछ दबाना है। शायद वो स्विंग कर रहे होते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। मेरे को शायद गिरना है भाई, मेरे को लग रहा है। स्टोरी प्रोग्रेस नहीं हो रही। मेरे को ईट करना है खुद को। आई बिलीव करना ही है मेरे को। यस, आगे मैं कहीं जा नहीं पा रहा विदाउट ईटिंग माई सेल्फ। आई थिंक ईट करना है मेरे को अपने आप को। ईट करना है, ईट करना है खुद को। ईट करना है, ईट अभी करता हूँ। या फिर शायद हाँ ब्रांच क्रैक हो जाएगी। हाँ कुछ हो रहा है। ओ यस, something is happening. The day he made up his Oh mind my to god. fly. And he did. What the fuck? कौन से बच्चे हैं? Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Same. भाई वो तो लाइफ को स्पीड रन करके। वो संजय का नाम लिखा है देख, ईडिथ, मिल्टन, लुइस और उसके नीचे संजय का नाम लिखा है। संजय was also part of the family, I believe. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Now what? अब हम जा रहे हैं। आ जाओ। Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. अरेंज कर रखी है बुक्स। ओह पजल। The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. कर लूँगा, अभी तो बहुत टाइम है।
Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Next समय Bigfoot. इधर भी आ गया Bigfoot. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Okay. Comic पढ़ रहे हैं As अब a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. Washed हो But गई. in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. What? Getting better. I think you just need the right motivation. ऐसी Her कौन सी biggest वो है भाई? fan चीक. and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now भाई क्या that खेल रहे हो was a ये? great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... What the fuck? That came from the basement. भाई comic You're right. experience भाई पूरा. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. पलटो पेज पलटो. She reached for the music box. अच्छा मैं कर रहा हूँ. मैं comic का part बन गया. Found the key. She listened for Rick, but the house was silent. मैं comic में खेल रहा हूँ अब. ओए comic का part बन गया मैं देख. The fuck? मैं comic में आ गया. Oh my god. She What found the Rick's fuck? crutch and imagined the worst. Murder है murder है. Murder है. तोड़ो The दरवाजा. gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Murder हुआ है यहाँ तो. The old fridge ये कितना rattled cool लग रहा है यार. and grew still. कॉमिक में बेंच ये तो कूल है भाई. ये तो अच्छा लगा देख के. समथिंग यूनिक. Oh dear! डरा नहीं. ओए. Oh! Rick? Okay. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding Okay. it when she fell asleep watching the late picture show. Late picture show. Hours later, Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter.
और फिर मैं कॉमिक में आ गया। इस बार वॉल्टर की बारी। वॉल्टर का रूम किधर होता था? इधर ही होगा। वॉल्टर ये रहा। Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. What? Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. The fuck? मारो साले। And here he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. भाई ये तो पीक गेम है भाई। Night, she played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. ओके ये ले बैंड छोड़। ओए ओए गया गया नीचे गया। He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. नीचे नीचे किधर से जाऊं? इधर से मार सकता हूँ भी मैं चीजों को। इसको मारूं? पंपकिन तोड़े? नहीं ये नहीं टूटेगा। कॉमिक की लॉर के हिसाब से चलना है लगता है। कहीं हम फेर बदल नहीं कर सकते। The hookman had vanished. ओए गायब हो गया? She listened for his breathing, but all she heard was डिंग डोंग। खोलू दरवाजा? मैंने खाना मंगाया था ना बाहर से, वो आया होगा शायद। ज़ोमैटो वाला होगा। she heard whispering. It was coming from inside the house. वो ओके दो लोग। Oh dear. What? The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about Bigfoot to bhi hai. happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. चिल्लाएगी। I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. अच्छा वॉल्टर की ओरिजिन स्टोरी भी है। That's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Oh. Now that's Okay. what I call a real eerie tale. भाई साहब। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। भाई कॉमिक के अंदर घुस के गेम खेल रहा Edie था। told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was.
काफी Maybe इंटरेस्टिंग। what Edie saw was a happy ending. बंद करो भाई, बंद करो किताब। ये तो पूरे वियर्डोस का खानदान है मेरे हिसाब से। कोई बहनचो स्नैक बन जाता है, कोई पता नहीं कुछ कर रहा है। I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. अब कहाँ आ गया? बाहर आ गया। Now what? इधर जाऊं? Going back? It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. अच्छा, अब हम बेसमेंट जा रहे हैं। When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Okay. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. अच्छा, इसको बुलाते थे पहले। Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. वो बच्ची तो बड़ी खतरनाक थी यार, वो तो कौन-कौन से जानवर बन रही थी। I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. इन बेसमेंट जाने का रास्ता तो मिले। मैडम, किधर से जाना है मेरे को? खिड़की तो बंद है यार। ये वाली खुली है लेकिन इसमें से जा नहीं पा रहा। वो वाला दरवाजा चेक कर। Maybe I should go check out that music box down by the basement. लेट्स गो, वहीं से चलते हैं। आई बिलीव रास्ता होगा। मेरे को मिला नहीं रास्ता, होना चाहिए उधर ही। तो हमें शायद वो कान भी रिकवर करना है, कटा हुआ, और चाबी भी चाहिए। यहाँ से जा सकता हूँ नीचे? Nope. If I keep winding the music box, maybe a key will pop out like it did in the comic book. वायु, लेकिन कॉमिक में जैसे घुस गया था मैं, वो बड़ा कूल था। कॉमिक के अंदर खेल रहा था मैं। मौत के बारे में सोचा है कभी आपने? क्या ये टी असली होते हैं? नहीं बात कर रही यार। यार रास्ता किस तरफ है? वेयर इज द वे? नीचे जाने का रास्ता यार। इतनी पजल्स, इतनी पजल्स। नॉर्मल रास्ता दो ना यार मेरे को। आई बिलीव वो रॉकेट वाले शिप की तरफ जाना हो, क्या पता। चेक करते हैं, क्योंकि इधर तो कोई रास्ता दिखा नहीं मेरे को। ओह, ये रहा। देयर इज अ वे। आ गया हूँ बाहर। एटिक तो जा नहीं सकते। वो घर में अचानक से और अंधेरा क्यों लग रहा है मेरे को?
ये रहा वो बॉक्स। चाबी चाबी चाबी। घुमाओ 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 और घुमाओ और घुमाओ। निकल गई। कटा हुआ कान नहीं है लेकिन। यार हर घर के बेसमेंट बेंच स्पूकी ही लगते हैं। घर में बेसमेंट बनाना क्यों? सारे मर्डर वहीं होते हैं, सारे भूत वहीं घूम रहे होते हैं। Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. टेटनस शॉट? ओए एक सेकेंड, ये चीज तो थोड़ी सी भयानक सी लग रही है। यही सब तो होता है बेसमेंट। I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. ऐसी मम्मी इसको टेटनस शॉट देती थी। I thought maybe she was hiding presents. I thought my mom was bad. It turned out she was hiding a lot more than that. चलो। I remember asking Mom once about where Walter had gone. ये गुफा की, ये तो मैंने अभी ध्यान दिया। The fuck? वो बेसमेंट में था ना, वो गुफा में क्यों आ गया? She said after Barbara died, he got as far away as he could. भाई क्या गेम है भाई, कहाँ जा रहा हूँ मैं? If there's a pattern in all Oh. these stories, I think it's that none of us has gotten very far. खाना वाना स्टोरेज करके रख रखा बिल्कुल प्रॉपर। देख पानी की गैलन, ये क्या चीज़ है? जेली, ग्रेप जेली, ये भी कुछ होगा। ड्रॉर चेक करते हैं, ड्रॉर। एक और नोट, वॉल्टर की लाइफ में जाएंगे शायद। Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. What? Ooh. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. मोल मैन ये है, underneath the house. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. क्या चल रहा है भाई ये? What the fuck? Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. True. मेरा खिलौना क्यों गिर गया लेकिन? Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Where monster though? क्या चीज है ये? अंडे लग रहा है। And then one day, everything just stopped. अच्छा अब वो नहीं आए। Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. अब? I'm done waiting. I have to leave while I still can. ये वो बच्चा वॉल्टर है जो पलंग के नीचे छुपा हुआ था। ये अंडरग्राउंड क्यों आ गया लेकिन? और 30 साल से रह रहा है। What the fuck? But why? भाई ये कौन सी जगह है? ये क्या है भाई? एक तो इतनी किताबें। I know it's out there somewhere. अब शायद से थोड़ा सा डरावना ना हो जाए। Whatever killed Barbara ये वही है and वो जो Molly कॉमिक नरेट कर रहा था, जिसकी ये and बात Calvin. उन सबको Maybe मारा है this is all a mistake. उसने।
कुछ हुआ. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. चल क्या रहा है भाई ये I'm इसका going to घर. appreciate all of it, especially the food. I don't मेरे mind को तो if I only have एक्सप्लेनेशन a ही year नहीं है left, कुछ. or a month, बाहर आ or गया. a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. ओके. तो मरने गया था इतनी दूर. इंटरेस्टिंग. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. ऐसा दिखता था वॉल्टर बड़ा होके. I'm sure my mom was trying to protect me. हम भी जाएंगे वॉल्टर के पास. अब तक तो वो चला गया होगा ना जो भी मोल मैन की बात कर रही थी वो बच्ची. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, हाँ यार. I can only imagine what else she was hiding. अपने I भाई don't के want बारे to में make नहीं the बताया same उसने. mistakes she made. घर के नीचे उसका भाई रहता था उसके बारे में कभी नहीं बताया. What the fuck? Trying to bury something that's still alive. जा रही है कहीं. Now that there's only one of us left, or maybe two, ये भी ट्रेन की I तरफ. thought it was time I heard the stories for myself. ये भी मरने जा I रही found है. out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Actually, Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. वॉल्टर. तो ये किसी कर्ज से डरते थे लगता है. I don't know if I should even be writing this. वो इसका भाई भी यहीं कहीं Maybe से it'd be गिरा better था. if all this just died with me. But I thought you should know about your family. भाई क्या है ये? And the history you're a part of. Okay. Understood. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Yes, I am lost. तो ये कोई कर्ज था इनकी I शायद think फैमिली में. people in these stories believed them, for what that's worth. इन्होंने अपने दिमाग में ही कर्ज बना लिया और उसको रियल बना दिया खुद ही. आड़ी टेढ़ी जगहों से मर मर के. अंडरस्टैंडेबल. अभी तो मेरा माइंड फक हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरे को समझ में ही आ रहा है. And when you look at the house, had that history of imagination and stubbornness and madness. ये क्या घर है ये किसने बनाया भाई? ये ऐसे कौन घर बनाता है? कौन है वो बिल्डर? Any of it seems possible. अक्की भाई है शायद से बिल्डर हो. आर्किटेक्ट. अच्छा उस पार आ गया वहाँ घर के. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it.
What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? What the fuck? पहले यहाँ पर cemetery बनाई है. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. ये pet cemetery. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Pet cemetery तो कोई movie भी थी ना? आज उनके ऊपर थोड़ा चल जाते, थोड़ी एक्टिविटी हो जाएगी. एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ना काफी टाइम से. चलो. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. ओह ये वो है घर के फैमिली मेंबर्स यहाँ दफन हो रखे हैं. मॉली फिंच के पास गुड़िया बन रखी है. ये एस्ट्रोनॉट था तो इसके पास ये बन रखा है चांद. स्वेन ने घर बनाया था तो इसके इधर वो बन रखी है एक्स. ईडी फिंच कैरेक्टर थी और एक्ट्रेस थी तो उसकी बुक बना रखी है. वॉल्टर भाई क्या करते थे? जमीन के अंदर रहते थे तो इसीलिए एक होल बना रखा है. इंटरेस्टिंग. और बारबरा फ्रेंच स्टार बन रखा है. स्टार थी जो. Interesting. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. ओ वहाँ कोई मॉन्यूमेंट है. देख भी सकते हैं. खुद दिख क्यों नहीं रहा लेकिन बहुत ब्लरी है. Edie said she dreamed about the old house every night. अच्छा ये पुराना घर है जो उसने बनाया था फोटो में जो था. नाइस. ये लग रहा है ना कोई घर. उसी में देखना है क्या दोबारा? ना और नहीं देख सकते. पीछे जाना है. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. और graves. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Oh. संजय भी था कोई. संजय कुमार थे. संजय कुमार is also here. संजय कुमार भी मारे गए हैं फैमिली में. R.I.P. Sanjay Kumar. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. 22 weeks pregnant? अच्छा weeks में calculate किया ना months की जगह. मेरी तो maths कमजोर है so I can't tell. ऊपर चढ़ सकती है यहाँ से. अच्छा सीढ़ी तो दे रखी है. Climb up. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Okay.
म्यूजिक चेंज हो गया। सैम की लाइफ में जा रहे हैं अब हम। यस, दादाजी की लाइफ। फोटोज में लाइफ। Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. मैं फोटो कैसे हूँ? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. ये Perfect. इसकी मम्मी। It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. अच्छा, बच्चे की फोटो लेनी थी। I'm हमें gonna take some pictures, okay? गाड़ी Just की be फोटो careful. That camera's older than you are. एक अच्छी सी फोटो। कहाँ की? यहाँ की? You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Not a good photographer. प्लेन खींच लेंगे Aw. 2-4। मैं लाइव मेमोरी बना रहा हूँ। अभी फोटो खींच के अभी पास्ट चेंज कर रहा हूँ। अब कुछ है भी खींचने के लिए? Definitely should not have drunk all that coffee. ओए पापा, Hold still while I take a picture. Hey! ओए बाप की फोटो ले ले। That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. कॉफी बॉक्स की फोटो, मच्छी जो हमने पकड़ी उसकी फोटो, नाउ बंदूक की फोटो। हाँ, अरेस्ट Last time I करवाएंगे। was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. Dad! Good eyes, Dawn. Stacked. Before you take the shot, let me get a picture of you. Where? कहाँ की फोटो लूँ अब मैं? वैंचो शादी का फोटोग्राफर ही बना दिया क्या? I'm over here, Dad. Where? अच्छा, ओ। Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. मतलब अमेरिकन फैमिली तो Let me get behind you. शूटिंग तो सिखाएंगे। Teach them when they're Do young. I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Shoot him. अच्छा, ओ। Now this is a Corsair. खिंची। Keep yourself squared up. मार दिया Great मैं। shot, Dawn! रो रही है। ओए सेल्फी GTA स्टाइल। I'm proud of you, style. Dawn. Always remember that, okay? ओ ये बढ़िया है। ओ भाई साहब। फ्रेम में आता हूँ। रुक। इधर से खिंचवा दे फोटो। Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. ओ भाई साहब। जा रहा जल्दी। Dad, it's switching. I think That's it's... totally normal, Dawn. ओ भाई Just क्या focus on the गेम है camera. भाई। Try not to think about. Dad! ओ Okay, that happened. Okay. अचानक से सीरियस हो गई चीजें। Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me.
मैटर सीरियस हो गया थोड़ा. इसके दादा का तो Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. इसका तो स्पार्टन एलिमिनेशन कर दिया इसके ग्रैंडफादर का. After Weird Sam game. died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. वियर्ड गेम. फनी के साथ साथ अचानक से ही सीरियस, सुसाइडल और मर्डरस हो जाता है. ठीक है. डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट. सैम फिंच. अच्छा, और इसके Dear दादा Kay, और दादी के बीच में. Do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. ओ, बच्चा बन गया मैं, बच्चा बन गया. बच्चा बन गया. ओए, अच्छा म्यूजिक बजाना है मेरे को. अच्छा मैं मेंढक हूँ. ओके. Bath time's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. वाह. अच्छा, मिनी गेम खेल रहे What his हैं. world was like. इंटरेस्टिंग. He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. एक्चुअली Whatever it was, he saw. भाई बच्चा बन गया मैं तो. ओए ओए, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है. वेल को फ्री करेंगे. इधर नहीं जा सकते ना, उधर ही जाना है. उधर लड़ाई हो रही है पेरेंट्स की, इधर हम बकचोदी करेंगे. It sure made him happy. ये ले. वेल को सीधा करो. हाँ. अच्छा, वर्ड गिराने हैं. अभी गिरा देते हैं. स्टीम अचीवमेंट भी मिल गया मेरे को. इसके ऊपर चढ़े. ओह, इंटरेस्टिंग. I know how silly it sounds. खुद ही नहला रहा है खुद को. वाह. But I'm worried about a baby being too happy. ओ, खुद ही नहला रहा है भाई खुद को. But I could feel him slipping away. लेट्स गो. ओ, मम्मी आ गई. Sorry about that, Gregory. मम्मी आ I गई. know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. फिर फोन आ गया.
Hold on, I don't want Gregory to hear this. अब क्या करूँ? अच्छा. I wish he could have told us. नाना चालू करो भाई. Continue. About the world he saw. Now bench. There's so much I don't understand. Okay. Okay. About Gregory. Oh my God. About everything. Now I know हम ना क्यों रहते इतनी देर से. क्यों हम खेल रहे थे. अब मैं समझ गया. अचानक से यार इतना फन होने के बाद गेम ट्रेजिक और डिप्रेसिंग क्यों हो जाता है? But I know what happened wasn't your fault. Oh my God. Holy shit. चल 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 ऊपर. I'm sure he's happy. नहीं. ये तो और जा रहा है डीपर. He'd want you to be happy too. चला गया. Good luck, Kay. Love, Sam. Okay, that was sad. तो एक और नाम टिक हो गया बच्चे का. 1976 से 77 एक साल का था बच्चा. मतलब एक साल का था बच्चा. Oh my God. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... अब गस की बारी. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard. Before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. पतंग उड़ा रहा हूँ मैं. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I remember. अच्छा शादी हो रही है उधर. इसके दादा की दूसरी शादी. ये बहन जो पतंग उड़ा रहा है इधर. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Oh! Savage child. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. ये तो अभी भी पतंग उड़ा रहा है बहन. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Interesting The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." I wonder ये कैसे मरेगा. अब तो मैं एक्सपेक्ट करने लग गया. ओ ओके टेंट उड़ गया. लेकिन ठीक है हम I मरेंगे. wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. How? इसका नहीं पता भाई कैसे मरा. Surprisingly, maybe he was lost in the storm. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. तो ये इसके दोनों भाई की डेथ. अब कौन बचता? ऊपर चढ़ सकते? My mom moved up to the Nice. loft after her brothers died. Oh, तो वो जो ऊपर At the फ्लोर्स time, बने हैं it ना? was as far away as she could get.
तो इनके लाइक पर्सनल स्पेसेस हैं शायद, रूम्स जहाँ भाग जाते थे, मे बी, आई डोंट नो. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. ओह, इसके पापा का नाम संजय था. संजय. इंडिया. मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, एंड a realistic photo. Very realistic photo. इसका स्क्रीनशॉट खींचेंगे. ये इनका स्केड्यूल, फ्लाई टू इंडिया. 10 ways to teach critical thinking for the home school student and teacher. अच्छा, interesting. Sanjay. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Good for her. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Okay. I'm sure Edie was happy to have her back. इनके नाम क्यों लिखे हैं इधर? इनकी ग्रेव्स तो नीचे थी ना? And to see kids in the house again. Okay. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. वो कितने ऊपर आ गए हैं? बहुत ऊपर बना दिया But भाई. it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Oh. Milton जिंदा है शायद. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. अच्छा, वो disappear हुआ है. तभी उसका डेथ का वो नहीं लिखा था. उसने बताया भी था शायद, ग्रेवस्टोन पे मॉन्यूमेंट बनाया था उसकी मम्मी ने, rather than a tomb. जा सकते हैं अंदर. चलो. ये गेम ना मतलब कुछ जगह होलसम हो जाता है, उसके बाद फिर इमोशंस ना 180 डिग्री घूम जाते हैं पूरे. अचानक से कुछ हो जाता है. ये रहा इसका Milton Finch in The Magic Paintbrush. ये भी भाई है इसका, जो गायब हो गया था. ओह, स्टोरी है. Okay. टैलेंटेड तो था भाई लड़का. Nice. He was a good kid. मिल्टन की स्टोरी में हम इतना नहीं जा पाए क्योंकि मिल्टन डिसअपीयर हुआ. पिक्चर बुक में अकॉर्डिंगली बता दिया लेकिन हमको डिसअपीयरेंस उसकी. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Okay. Time to go out. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. नहीं, उस पार से ही जाना पड़ेगा. अब हम और ऊपर जा रहे हैं. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Louis. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Why? Except Louis. Oh, Louis was like fucking
स्कूबी नहीं, शैगी स्टोनर था। मैरुआना की फोटोज। लेकिन हम जा रहे हैं उसके रूम में। ये तो प्रॉपर गंजेड़ी रूम है। Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Louis was a Ganjidi then. Now let's see how he perished. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Oh. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. जल्दी जल्दी करो। In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to मच्छी काटो, निकालो। ये क्या है? wander. Oh, wander. Let's wander. Oh, I'm like drawing now. I asked him to describe it. What the fuck? अब मैं multitasking कर रहा हूँ। अब हम अपने दिमाग में भी खो रखा हूँ। He said he started small, और मैं काम भी कर imagining रहा a हूँ। labyrinth. Interesting. मच्छी काट काट। He'd feel his way about. भाई दो चीज साथ में कैसे होंगी? Then something moved. Something moved? Bats. And toads. Okay. मच्छी काटने पे फोकस करूं या फिर पजल में फोकस करूं? And things that have not names. ड्रैगन? He knew it was all in his head. ओह, उधर भी कट रहा है कुछ, जैसे मैं इधर लिया। But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. काट 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 काट। But he found something more. अभी ख्याली पुलाव में I पूरा worried खाए, about him then. काम करते करते ना। मेरे साथ भी हो जाता है, पता है कभी कभार है। Daydreaming at the cannery. मैं भी करने लगता हूँ daydream। I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. ओह, मतलब वो full depression में empty mind में काम कर रहा है, उसके mind में कुछ और चल रहा है ना, क्योंकि वो no fucks to give वाले उसमें mindset में काम कर रहा है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो खो चुका है अपनी दुनिया। Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. चल 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 चल। It seemed very promising at first. डॉगी की आवाज आ रही है। He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Louis Topia. Louis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians.
धीरे धीरे देख पिक्चर भी ग्रो कर रही है इसके काम से हट के देख अभी हम बहुत छोटे पार्ट में थे अब देख उसके माइंड के जो वो है इमेज वो पूरा अक्वायर कर रही है about starting a band. And he was always humming something. बड़े हो रहे हैं ख्याली पुलाव धीरे धीरे Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. Oh. अपने दिमाग में बिल्कुल He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. अच्छा नाव बन गए हम He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. लुइसविल तो सही में जगह है St. Louis. सेंट लुइस ओह वर्ड प्ले कर रहे He हैं started drifting away from our reality. वर्ड प्ले कर रहे हैं Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Minneapolis. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. करता रहे काम भाई छोड़ना इग्नोर बीचेस दे कम एंड गो काम कर साथ साथ में ख्याली पुलाव भी बनाता रहे In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. अच्छा चूज करने का ऑप्शन है वाह तो इमेजिनेशन में खो रखा है भाई प्रॉपर The queen was on her own quest for radiant rainbows. Radiant rainbows. गिरा दे बैंड सारे रेनबो He followed the sound of her harp सितार में silver harp. उसके ड्रीम्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हावी हो रहे हो ओए एक नोट छोड़ दिया मैंने His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. बहुत सारी मच्छियाँ आ रही हैं बहुत सारी मच्छियाँ आ रही हैं कैसे काम करूँगा इतना बहुत सारी मच्छियाँ आ रही थी अब अचानक से थर्ड पर्सन बन गया ओ भाई थर्ड पर्सन बन गया In his own eyes, he'd become something greater than a king. काम करता रहे काम साले ख्याली पुलाव तो बना रहा है काम भी लेकिन रुकना नहीं चाहिए For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him.
चलो भाई, अब बाहर आ गया वर्क प्लेस से, शिफ्ट ओवर हो गई शायद मेरी. He began to forget the world we know. अच्छा ये है वो फैक्ट्री. Oh my I God. think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. काम करता ही रह गया वो शायद. सारे लोग चले गए, दफ्तर बंद हो गया, वैन से काम करेगा. अरे हाँ यार, He actually. began to despise the man with a royal contempt. Oh my God. ये तो पागल हो गया. पागल हो गया. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. नाचो बहन चो. Thank you, thank you. Employee of the month बन गया शायद. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. Oh. One second. I don't like this. I am not liking this. ये गिलेटिन क्यों है ऊपर? भाई गिलेटिन है भाई ऊपर. ओए चुप कर, बंद करो ये गाने वाने. जा रहा हूँ मैं यहाँ से. भाई गिलेटिन है भाई ऊपर. ऐसा ही है तो might as well take it. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Shit. पागल हो गया वो. My brother was really cool. I wish you could have met him. He was so proud of being Indian. I think for him, it was a way to be something other than just a Finch. और ऊपर जाना है. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Is your book there? No, nothing. What happened that night had been coming for a long time. Maybe I should have come sooner. तो सबसे ऊपर एडिट करूँगा. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. ये क्या चीज़ है? लेट गए.
लेट जा। अब बता अपनी स्टोरी बता। That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Okay. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. इधर एक secret passage है. Yes. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Final story. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. Acha. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, snack. I've seen Left that में snack house था. every day of my life. ये वही snack है. नहीं तो लकड़ी है. Snack लग रहा था. Or temple? But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. अच्छा तो मैं खो गया. I got turned around. कहाँ आ गया मैं? कहीं जा रहा हूँ. For a while, I wandered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. क्या यहाँ येटी आने वाला है? But when I saw them, they felt like old friends. क्या यहाँ में That मौत से डर night, लगेगा? a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. ओए आ गए हम टेंपल पे आ गए. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? ओए It's mine. flashback के अंदर flashback. Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. अच्छा. Flashback के अंदर दूसरा flashback. I never saw Great Grandma Edie again. Oh. The next morning, the van came to pick her up, That but is she was so already sad. gone. After that, we moved around a lot.
अच्छा We यहाँ both मैं tried अपने to make हाथों the से best खेल of it. सकता हूँ. वेव बनाएंगे वेव. A few years went by. कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. Ooh. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. अच्छा, हम कंट्रोल. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. लेकिन है कौन But I ये? guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want अच्छा, you इसका to be बच्चा है. amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Oh. Sad. ये क्या घर है भाई? ये किसका घर है भाई? ऐसे कौन से घर है भाई? Good game, but Shirley Dallas. ओह, गेम खत्म हो गया. सबकी चाइल्डहुड फोटो लगा रखी है. इट वॉज अ गुड गेम. थोड़ा सा अजीब था. थोड़ा क्या बहन चो, बहुत ही अजीब था यार. बहुत कुछ हो गया बहुत कम समय में. 2 घंटे के आसपास का गेम था आई बिलीव. और काफी कुछ हो गया उस समय. अभी तो बीच बीच में थोड़ी बहुत पजल्स थी शायद से, वो सॉल्व नहीं करी थी मैंने. गुड गेम, होलसम. फिर घूम के 180 डिग्री वो कुछ और ही बन जाता था हर स्टोरी में गेम. लेकिन सही है, काफी इंटरेस्टिंग. खास करके वो कॉमिक वाला जो पोर्शन था ना, जिसमें कॉमिक के अंदर खेल रहा था, वो वाला पोर्शन काफी सही था. और एक ये वाला मच्छी कटिंग वाला, उसके ब्रेन का वो वाला पोर्शन भी काफी अच्छा था. जो अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहा था ना वो वाला. बाकी कुछ कुछ ट्रेजिक भी थी इसमें स्टोरीज, जैसे वो बच्चे वाली. वो बच्चा वैंचो मजे कर रहे थे, हम खेल रहे थे, अचानक से पानी भर गया वैंचो बाथटब में. इंटरेस्टिंग तो था यार गेम.
ऐसे गेम वैसे मेरे को आदत नहीं है यार खेलने की, सैडनिंग या फिर जो ऐसे होते हैं ना अजीब से, लेकिन फॉर अ चेंज आज खेला हूँ मैंने, अच्छा लगा ये गेम। इसको पता है, हम अगर कोई दिमाग लगाएगा ना आउट ऑफ द वे, तो इसको 2 घंटे से पहले ख़त्म करके इसको स्टीम पे रिफंड भी कर सकता है दोबारा। मतलब पूरा गेम एक्सपीरियंस कर लिया थोड़ा बहुत जल्दी, बट जैसे क्रेडिट स्किप कर दिए, बाकी सब चीज़ें स्किप कर दी, तो अभी शायद से 1 घंटा 50 मिनट हुए, तो इजी हमारा गेम ख़त्म हुआ, आराम से इसको वापस कर सकते हैं खेल के अपना पूरा, और फिर पैसे वापस ले लो। तो मतलब फ्री गेम एक्सपीरियंस हो गया एक तरीके से, कर सकते हैं। मतलब शायद मैं तो बहुत पहले लिया था, मैं शायद वापस नहीं कर पाऊंगा इसको। काफ़ी टाइम से पढ़ा ही था ये लाइब्रेरी में, मेरी टाइम ही नहीं मिला कभी खेलने का, इसको आज मिल गया, एक ही स्ट्रीम में ख़त्म कर दिया गेम, छोटा सा ही गेम था। प्ले टेस्टर्स के नाम भी लिखे। अरे बस यार और क्रेडिट मत दिखाओ, बहुत हो गया। अन्नपूर्णा इंटरैक्टिव वाले, इन लविंग मेमोरी ऑफ लुइस फिंच। चलो आई बिलीव क्रेडिट खत्म होगा। कुछ है पोस्ट क्रेडिट? नहीं, आई डोंट थिंक सो कोई पोस्ट क्रेडिट है। तो इन सब की स्टोरी थी। हम कहाँ से आए थे? हम यहाँ से आए थे, मॉली से हम आए, बारबरा, फिर कैल्विन, फिर ईडी, फिर सैम, फिर डॉन, फिर शायद हम इधर आए थे, इधर कहीं, फिर यहाँ से चालू हुआ था। तो इसी के साथ मेरे हिसाब से बंद करना चाहिए। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। चलो निकलने का टाइम आ गया, बाय बाय।